Hello everyone. Today we were going to start the new chapter. And the name of the chapter is In Rain Go Away. Let's start the chapter. Chapter 5 Rain Rain Go Away. Theme Stream. This story is about the Wright family and their mysterious new neighbors. Lillian Wright is curious about the Sakaros who seem very private and they're always checking the weather. One day, the Wrights invite the Sakaros to a park where they notice Sakaro's strange habits like eating only cotton candy and being overly concerned about the weather. In the end, when it suddenly rains, the Sakaros melt and revealing a shocking secret. ये स्टोरी जो है वो एक राइट फैमिली के ऊपर है और उनके जो बहुत ही नए नेबर्स आते हैं सकारोस जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। विलियम राइट जो है वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं उनके बारे में जानने के लिए, कुछ वेरी प्राइवेट और हमेशा वो क्या ही कीप ऑन चेकिंग द वेदर। तो एक दिन जब राइट्स ने सकारोस को पार्क में इनवाइट किया जहाँ पे उन्होंने नोटिस करा कि सकारोस की बहुत ही हैबिट्स बहुत ही डिफरेंट है। लाइक ईटिंग खाली कॉटन कैंडी खाते हैं, ओवरली कंसर्न्ड है वेदर को लेकर। तो इन दी एंड जब सडनली बारिश हो गई तो सकारास जो थे दे वर मेल्ट और रिवीलिंग अ शॉकिंग सीन। कैरेक्टर्स इन स्पॉटलाइट Lillian Wright. Lillian is a curious and friendly woman who is eager to learn more about her new neighbors, the Sakaros. She notices their strange behavior and organizes an outing with them. George Wright, George is Lillian's husband. He's initially uninterested in their new neighbors, but becomes more curious as he observes the Sakaros' unusual habits during their outing. Mr. and Mrs. Sakaro, Sakaros are the mysterious new neighbors. They are very cautious about the weather and themselves. Their strange behavior hints at a secret that is revealed in the Tommy Wright. Tommy is the right son. He's friendly and of the same age. Sakara. The quest begins. The Wrights are an average American family थी. Mrs. Wright एक homemaker थी जबकि उनके husband is a writer थे. Their love for baseball उन्हें पसंद था. They become curious about their mysterious जो नए neighbors आए थे उनको देख के बड़े curious हुए. The Sakaro जो strangely obsessed with the weather. What do you think? क्या reason हो सकता है for their odd behavior? There she is again, said Lillian Wright, as she adjusted the Venetian blinds carefully. There she is, George. क्या? ये यहाँ पर है जॉर्ज। देयर हु इज मैंने कहा कौन है हस्बैंड ने पूछा ट्राइंग टू गेट द सेटिस्फैक्टरी कॉन्ट्रास्ट ऑन द टीवी सो दैट ही माइट सेटल डाउन टू द बॉल गेम। वो देखने के बाद वो जो आंसर वहीं पे बैठे बैठे पूछ रहे थे सो दैट वो अपना गेम आराम से देख सके। मिसेस सकारो उसने बोला एंड देन टू फॉरेस्ट ऑल हर हस्बैंड्स इनएविटेबल हु दैट एडेड हिस्ट्री द न्यू नेबर्स और गुडनेस से नए नेबर्स हैं। ओ सन बाथिंग तो बाहर धूप में खड़े सन बाथिंग ऑलवेज सन बाथिंग आई वंडर वेयर हर बॉयज मैं सोचता रहता हूँ आई गेट सरप्राइज कि बॉय कहाँ है उनका। ही इज यूजुअली वो बाहर ही रहता है नाइस डे लाइक दिस स्टैंडिंग इन दैट ट्रिमेंडस यार्ड ऑफ देयर्स में खड़े रहते हैं एंड दे थ्रोइंग द बॉल अगेंस्ट द बॉल को थ्रो करते रहते हैं। डिड यू एवर सी हिम क्या तुमने कभी उसको देखा जॉर्ज? आई हैव हर्ड इट मैंने सुना है बहुत इज अ वर्जन ऑफ चाइनीज वाटर टॉर्चर। Bang on the wall, biff on the ground, smack in the hand, bang, biff, smack, bang, biff. Kind of Chinese version. He's a nice boy, quiet है, well behaved है. So I wish Tommy would make friends with him. कि वो उसके साथ friends बना सकता है. He's the right age too. Just about 10. बस सिर्फ 10 years का है. And I should say कि वो दोस्त बनने चाहिए. I didn't know Tommy was backward about making friends. Well, it's hard with the Sakaros. They keep so to themselves. वो मतलब अपने में ही ज़्यादा रहते हैं, जिससे बात नहीं करते। I don't even know कि what मिसेस सकारो does कि वो क्या करती है। Why should you? तुम्हें क्यों पता होगा? Not really anyone वो किसी का मतलब नहीं है उस चीज़ से और हमें क्या ही करना है। It's odd that I never see him to go work. इस बहुत ही odd है मैंने उन्हें कभी काम पे जाते हुए नहीं देखा। No one ever see me to go work. मुझे भी किसी ने नहीं देखा। You stay home and write. What does he do? उसने कहा कि तुम घर पे रहते हो, लिखते हो। वो क्या करते हैं? Oh George, Lillian retreated from the window. I think we should make an effort हमें करनी चाहिए neighborhood should कि हमें भी कोशिश करनी चाहिए पूछने की बात करने की। What kind of effort? George was comfortable on the couch now. वो आराम से बैठ गया था king size soda in his hand उसके हाथ में बड़े से कप था freshly opened and frosted with moisture. To get to know them उन्हें जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए. Well, didn't you? When she did just moved in, you said you called. आई सेड हेलो मैंने कहा मैंने हेलो बोला बट वेल शी वुड जस्ट मूव्ड इन वो अंदर चली गई और हाउस वाज स्टिल आफ्टर इट्स बीन
2 months नाउ एंड इट्स स्टिल नथिंग मोर देन हेलो से ज्यादा कभी हुआ ही नहीं. शी इज ऑड. वो बहुत अलग है. शी इज ऑलवेज लुकिंग. वो हमेशा स्काई को देखते रहते हैं. आई हैव सीन हर डू इट 100 टाइम्स. मैंने 100 टाइम्स देख लिया. जब देखो कि वो स्काई की तरफ ही देखते रहते हैं. कभी वो बाहर नहीं निकलते. जैसे क्लाउडी होता है. वंस व्हेन द बॉय वाज आउट, जब बॉय बाहर खेल रहा होता है तो उनको बुला लेती है अंदर आने के लिए, शाउटिंग दैट इट वाज गोइंग टू रेन. बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी. आई हैपेंड टू हियर हर. मैंने सोचा. आई थॉट, ओ नो, वुडंट यू नो मी? नो एंड मी विद अ वॉश ऑन द लाइन. So I hurried out. And it was broad sunlight. Oh, there were some clouds but nothing really. उसने कहा थोड़े बहुत बादल थे बट ऐसा तो कुछ नहीं बारिश हो जाएगी या कुछ भीग जाएंगे. Did it rain eventually? Of course not. कोई बारिश नहीं हुई. I just had to run out into the yard for nothing. When the excitement of the match over हो गया तो and Pitcher was trying to regain his composure, तो जॉर्ज ने called out after Lillian. Well, since they are from Arizona से हैं तो I dare say they don't know rain clouds और तरह के from any other kind. उन्हें नहीं पता होगा. Lillian came back into the living room. From where? From Arizona. According to Tommy. According को Arizona से आए हैं. How did Tommy know? Tommy को कैसे पता होगा? He talked to their boy in between ball chucks. I guess he told Tommy they come from Arizona and then the boy was fun. मैंने उन दो देखा था कि उसने बताया कि मैंने उनसे जैसे गेम वगैरह खेल रहे थे तो बीच बात करने की कोशिश करी तो उसने बताया कि हम एरिजोना से हैं. इतनी देर में वो कुछ और बात करता वो अंदर बुला लिया. They don't know what to make out of a good rainy climate like ours. उन्होंने कहा कि ये रेनी अच्छे क्लाइमेट में से वो क्या ढूंढना चाहते हैं. आई डोंट नो. Lillian went back to the Venetian blinds and उसने बोला I simply just have to make her acquaintance. So she just want कि वो हम किसी को जान सके, उनसे बात कर सके. She looks very nice. अच्छा लगती है. Oh, look at that George. George was looking at nothing but the TV. George तो सिर्फ मैच देख रहा था. Lillian said, I know she's staring at that cloud and now she'll go in house. Honestly, तो ये क्लाउड को देखती रहेगी. अब वो थोड़ी देर बाद अंदर चली जाएगी. George was out for 2 days later on a reference search in library and came home with a lot of books. अब जॉर्ज जो था वो बाहर गया था. आफ्टर 2 days ये वापस आया लोड ऑफ बुक्स लेकर. विलियम ने उसे ग्रीट करा. जुबिलियंट ने बोला नाउ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. कल तुम कुछ भी करोगे. दैट साउंड्स लाइक अ स्टेटमेंट नॉट अ क्वेश्चन. मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ स्टेटमेंट दी है, क्वेश्चन तो नहीं पूछा. इट्स अ स्टेटमेंट. वी आर गोइंग आउट विद सकारोस टू मुर्फीज पार्क. हम सकारोस के साथ मुर्फीज पार्क जाएंगे. हाउ डिड इट हैपन? उसने कहा ऐसे कैसे हो गया. आई जस्ट वेंट अप टू देयर हाउस दिस मॉर्निंग एंड रैंग द बेल. मैं आज सुबह उनके घर गई, बेल बजाई. दैट्स इजी. इट वाज़न्ट इजी. आज मैं वहाँ खड़ी रही अपने फिंगर डोरबेल पे दबाती रही टिल आई थॉट कि रिंगिंग द बेल ईजियर होगा देन हैविंग द डोर ओपन एंड बीइंग कॉट. जब मैं बाहर खड़ी रहूंगी आई विल बी स्टैंडिंग आउटसाइड लाइक देयर अ फूल. वो लेकिन शी वाज आज स्वीट. वो बहुत अच्छी थी. उसने मुझे अंदर बुलाया. उसको पता था मैं कौन हुई. शी सेड शी वाज सो ग्लैड दैट आई हैव कम टू विजिट एंड यू सजेस्टेड वी गो टू दिस पार्क. Yes, I thought if I suggested something that would let the children have fun, इसलिए बोला कि बच्चे भी enjoy कर पाएंगे, it would be easier for her to go along with it. She wouldn't want to spoil a chance for her boy. वो कोई chance spoil नहीं करना चाहती. Oh, you had a reason for all this. So it comes out. You wanted the cook's tools. But please, spare me the color scheme details. I'm not interested in the bedspreads or the size of the closet. So it was a secret था उनके happy marriage का. That Lillian जो है उसने कोई attention नहीं दिया जॉर्ज के towards. She went into the color scheme details में गई. It was most meticulous about the bedspread and give him an inch by inch description दिया closet size and clean. I have never seen any places so spotless. कहा कि मैंने तो ऐसी so spotless place कभी नहीं देखी. If you get to know her, अगर तुम उसको जानोगे then she'll be setting you impossible standards. हो जाए मतलब एक set किया है उसने and you will have to drop her in self. हर किचन वॉज उसकी किचन इतनी ज्यादा क्लीन थी जिसको तुम बिलीव नहीं कर सकते. आई आस्क्ड फॉर अ ड्रिंक ऑफ वाटर. मैंने उससे मांगा एंड शी हेल्ड द ग्लास अंडरनेथ द टैप एंड स्लोली उसने पोर किया ताकि नो वन ड्रॉप की एक भी ड्रॉप नीचे ना गिरे. इट वॉज एन अफेक्शिएशन. शी डिड इट सो कैजुअली. उसने ऐसे किया कि आई जस्ट न्यू शी ऑलवेज डिड इट द वे कि वो इस तरीके से हमेशा करती है. एंड व्हेन शी गिव मी द ग्लास, जब उसने मुझे ग्लास दिया उसने बहुत ही क्लीन नैपकिन से उसको पकड़ा हुआ था जैसे हॉस्पिटल हो लाइक में करते हैं सैनिटरी. She must be a lot of trouble to herself. Did she agree to come with us right off? क्या वो agree है हमारे साथ आने के लिए? Well, not right off. She called to her husband को उसने call किया about what the weather forecast क्या है. And then he said कि newspapers all said कि it would be fair tomorrow.
बट दे वर वेटिंग फॉर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन द रेडियो के लिए वेट कर. All the newspapers said so. Of course. They all just print the official weather forecast को print करते हैं, but I think वो subscribe करेंगे to all the newspapers. Please. I have watched the bundle Newsboy news. कि मैंने देखा था कि Newsboy ने उनके घर में बहुत सारे वो सारे न्यूज़पेपर में वेदर फोरकास्ट चेक करेंगे. There isn't much you miss, is there? Anyway, said Lillian. She called up the weather bureau को उसने बुलाया and had them tell her the latest जो है और she called it out her husband को बुलाया and they said they would go except they would phone us if there were any unexpected change होगा weather में तो वो हमें बता दें. All right, तो हम चलेंगे. Then we'll go. Sakaros young थे, pleasant थे, dark and handsome. As they come down long walk from their home to where the right automobile parked करा गया, Lillian asked, "Is that a handbag he's carrying?" उसने कहा कि ये handbag है जो तुम carry कर रहे हो. पॉकेट रेडियो ताकि हम वेदर फोरकास्ट सुन. सकारो बॉय केम रनिंग वो उसके पीछे पीछे भागते हुए आए वेविंग समथिंग जो टर्न आउट टू बी अ एनीरॉइड बैरोमीटर था एंड ऑल थ्री गॉट इनटू द बैक सीट पे बैठ गए. कन्वर्सेशन टर्न शुरू हुई एंड लास्टेड विद नीट गिव एंड टेक और इम्पर्सनल सब्जेक्ट. मुर्फी पार्क में जब वो रास्ते में जा रहे थे. सकारो बॉय इतना पोलाइट था रीजनेबल दैट इवन टॉमी राइट वो पेरेंट्स के बीच में बैठा हुआ था फ्रंट सीट पर क्वाइटर था यूजुअल से और लिलियन ने कुडंट रिकॉल नहीं करा रही थी व्हेन शी हैड स्पेंट सो प्लेजेंट अ ड्राइव. She was not the least disturbed by the fact that barely to be heard under the flow of the conversation Mr. Sakaro's small radio was. तो उसको उस चीज से वो बहुत ही लीस्ट डिस्टर्ब था इस फैक्ट से कि अंडर द फ्लो ऑफ दी कन्वर्सेशन जो भी उनकी बात चल रही थी उनका रेडियो ऑन है नहीं है उन लोगों को इस चीज से पड़ रहा था. It was a beautiful day at Murphy's Park with a cheerfully bright sun in a blue sky. Even Mr. Sakaro ने thought he inspected उन्होंने every quarter of heaven उन्होंने चेक किया बहुत ही careful eye से and then stared piercingly at the barometer को देखा seemed to have no fault to find. Lillian took the two boys को amusement sections में ले गई and bought enough tickets वहाँ पे खरीदे ताकि one ride for each सब तरह की rides वो ले सके वहाँ पार्क में. Please, she had said to the protesting Mrs. Sakaro, let this be my treat. यही मेरा treat होता है. Let you have your turn next time. मैं आपको next time मौका दे दूंगी. तब आप पैसे दे. When she returned, जब वो वापस आई, George was alone. Where? He began. Just down there at the refreshment stand पर. I told them I'll wait here for you. कि मैं wait करूंगी. He would join them. He sounded gloomy. वो बहुत ही sad लग रहा था. I think he must be independently wealthy. What? I don't know what he does for a living. देखा मुझे नहीं पता कि वो क्या करते हैं कैसे रहते हैं. Now who's curious? Upon curious है. I was doing it for you. He said he's just a student of human nature. How philosophical. That would explain all those newspapers. Yes, but with a handsome, wealthy man next door, it looks as though I'll have impossible standards set for me. तो उसने कहा कि but with a handsome, wealthy man next door, it looks as if कि अपना कोई थोड़ा ऐसा standard they have set for me too. So don't be silly. And he doesn't come from Arizona. I said, don't be silly. वो Arizona से नहीं आए हैं. He doesn't. I said I heard he was from Arizona. मैंने सुना है. He looked so surprised. It was obvious he didn't. There he laughed. वो हंसे and asked if he had Arizona accent. वहाँ का accent है बोलने में. Come on, they are waving. Oh, look at what they are. What देखो वो क्या लेकर आए. The Sakaros were each holding three sticks of cotton candy. Huge swirls of pink foam, pink color की जो cotton candy की होते हैं उस तरीके pink लेकर आए थे cotton candy. Heads of sugar dried out of frothy syrup. So that will be whipped about in a warm vessel. वो मेल्ट स्वीटली इन माउथ में अच्छे से मेल्ट हो जाती है एंड लेफ्ट वन फीलिंग स्टिकी स्टिकी सी फीलिंग आती है. द कारोज हेल्ड वन आउट टू ईच राइट एंड आउट ऑफ पोलाइटनेस द राइट्स ने उन्होंने सबको एक एक दिया तो उन्होंने सबने एक्सेप्ट किया. देन दे वेंट ट्राइड देयर हैंड एट डार्ट्स एट नॉकिंग वुडन सिलेंडर्स ऑफ पेडेस्टल्स. दे टुक पिक्चर्स ऑफ देमसेल्व्स एंड दे रिकॉर्डेड देयर वॉइसेस भी उन्होंने रिकॉर्ड करा. टेस्ट करा अपने स्ट्रेंथ ऑफ देयर हैंड ग्रिप की कितने अच्छे से वो पकड़ है उनकी. Eventually, उन्होंने youngsters collect करे who had been reduced to a satisfactorily breathless state of rolled up. Right. And Sakaros ने क्या किया? They took off there instantly in the refreshment stand. Tommy wanted a hot dog चाहिए था and George ने tossed him करा एक quarter. वो फटाफट गया
फ्रैंकली जॉर्ज ने बोला, आई प्रेफर टू स्टे हियर, मैं यहाँ रहना चाहूंगा। अगर वी सी देम बाइटिंग अवे एट अनदर कॉटन, क्या पता वो अनदर कॉटन कैंडी स्टिक ही खाने लग जाए। आई टर्न ग्रीन एंड सिकन ऑन द स्पॉट, इफ दे हैवंट हैड अ डजन अपीस आई ईट अ डजन माई सेल्फ, मैं अपने आप ही खा लूंगा। आई नो दे आर बाइंग अ हैंडफुल फॉर द चाइल्ड, मुझे पता है देव अपने बच्चे के लिए ही वो खरीद पाएंगे। आई ऑफर्ड सकारो एक हैमबर्गर दिया एंड उसने जस्ट लुक ग्रिम एंड शुक हिज, अपना सिर हिलाया। नॉट दैट अ हैमबर्गर मच बट आफ्टर इनफ कॉटन कैंडी थॉट टू बी अ फीस्ट। आई नो आई ऑफर्ड, मैंने उसको ऑरेंज ड्रिंक दिया। वे शी जम्प्ड व्हेन शी सेड नो, यू वुड थिंक आई वुड थ्रोन इट ऑन हर फेस, जैसे मतलब वो जंप किया उसने कि नो, मेरा मन था कि मैं उसके फेस पर आई शुड थ्रो इट। स्टिल आई सपोज दे हैव नेवर बीन टू, मुझे तो ऐसा लगा कि वो कभी इस तरह की प्लेस पर कभी पहले नहीं गए। दिल फिल अप ऑन कॉटन कैंडी को फिल अप किया, देन नेवर ईट इट अगेन फॉर 10 years, और ऐसे खा रहे थे एज इफ दे हैव 10 साल से ना खाएंगे। वेल मे बी दे वॉक टुवर्ड द सकारोस, यू नो लिटिल इट्स क्लाउडिंग अप, थोड़ा थोड़े बादल आने शुरू हो गए। मिस्टर सकारो के पास रेडियो आ गया था, ईयर पास रखा हुआ था एंड वो एंशियसली वेस्ट की तरफ देख रहा था। ओहो सेड जॉर्ज, ही सीन इट, नाउ ही गोइंग वॉक, अब वो उसे घर जाना होगा। All three Sakaros were upon him, polite and insistent. They were sorry. Sorry बोलने लगे, politely उन्होंने बात करी. They had a wonderful time. Right, they would have to be their guests as soon as could be managed. But now, really, they had to, उन्हें घर जाना था. It looked stormy. उन्हें ऐसा लगा था कि तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है. तो मिसेस सकारो wailed that all the forecast भी fair weather की थी. जॉर्ज tried to उन्हें कंसोल करने की उन्हें कोशिश भी करी. It's hard to predict a local thunderstorm, but even if it were to come, it mightn't be, it wouldn't last more than a half an hour outside. देखा, हो सकता है छोटा मोटा थंडरस्टॉर्म आ भी जाए, पर अगर वो थोड़ी देर आएगा भी तो वो हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं हो पाएगा। एट विच कॉमेंट द सकारो यंगस्टर seemed on the verge of tears. Mrs. Sakaro's hand, holding a handkerchief, trembled visibly. Let's go home, said George in resignation. At which comment अब सकारो यंगस्टर जो है seemed on the verge of tears, और मिसेस सकारो का हैंड होल्डिंग, उन्हें एक हैंडकरचीफ पकड़ी हुई, ट्रेम्बल विजिबली, लेट्स को चलो हम घर चलते हैं, सेड जॉर्ज। अब ड्राइव बैक वापस चले टू स्ट्रेच इंटरमिनेबली, देयर वाज कोई कन्वर्सेशन नहीं था जब वापस जाने बातें नहीं। मिस्टर सकारो का रेडियो बहुत ही लाउड था, एज यू स्विच फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, मतलब बार बार चला रहे थे, बंद कर रहे थे कि वेदर रिपोर्ट मिलती है उनको एवरी टाइम। दे वर मेंशनिंग लोकल थंडर शावर्स नाउ। अब सकारो यंगस्टर जो था ये पाइप्ड अप दैट बैरोमीटर भी फॉलो होने लगा था। और मिसेस सकारो फिर इन द पाम ऑफ हर हैंड स्टेयर्ड, उससे अपने हाथ उठी, हाथ पकड़ लिया और स्काई को देखने लगी और जॉर्ज से पूछा, कुड नॉट ड्राइव, क्या वो जल्दी तेज नहीं चला सकती। ए विंड हैड स्प्रंग अप, तेज हवा चलने लगी, ड्राइविंग द डस्ट ऑफ द वीक्स ड्राई रोड बिफोर इट। व्हेन दे एंटर्ड द स्ट्रीट ऑन विच दे लिव्ड एंड लीव्स रसल्ड ऑमिनियसली, लाइटनिंग फ्लिकर्ड, तभी आंधी सी आने लगी, लीव्स उड़ने लगी, पत्ते गिरने लगे, तो वो जब तेज चलाएंगे तो आंधी में दिक्कत होती है, मिट्टी आती है। जॉर्ज सेड, यू विल बी इंडोर्स इन 2 minutes, आप घर के अंदर होंगे, विल मेक इट। पुल्ड अप एट द गेट दैट ओपन ऑन टू द सकारो स्पेशियस फ्रंट यार्ड एंड गॉट आउट ऑफ द कार, ताकि वो बैक डोर को खोल सके। उसने सोचा ही फेल्ट अ ड्रॉप, उसने कोई ड्रॉप महसूस किया, बारिश की बूंद। दे वर जस्ट इन टाइम, सकारो स्टम्बल्ड आउट, फेसेस ड्रॉन, टेंशन हो गई थी उनको, मटरिंग थैंक्स बोल रहे थे एंड स्टार्टेड ऑफ टुवर्ड्स देयर लॉन्ग फ्रंट वॉक एट द डेड। Honestly, began Lillian, you would think they were. The heavens opened and the rain came down in giant drops. और धीरे धीरे बारिश होनी शुरू हो गई, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिरने लगी, एज दो सम सेलेस्टियल डैम हैड सडनली बर्स्ट हो गया। अब टॉप ऑफ देयर कार वो था फाउंडेड विद 100 ड्रम स्टिक्स एंड हाफ वे टू देयर फ्रंट डोर। सकारोस स्टॉप हो गए एंड लुक डेस्पेरिंगली अपवर्ड, देखने लगे, उनके फेसेस ब्लर्ड हो गए एज द रेन हिट एंड स्ट्रैंड एंड रैन टुगेदर। ये सारे सारे all three shriveled, collapsing within their clothes. It sank down into three sticky, wet heaps. And while at the right sat there, transfixed with honor, Lillian ne found herself able to stop competing. Made of sugar and afraid they would American spellings in the story have been written. Fun fact, the fear of rain is called omprobia. In real life में Nikola Tesla एक famous inventor थी, reportedly उनका strong dislike था of pearls and rain. Similar to how Sakaros fear rain. तो कुछ लोगों को रेन भी अच्छी नहीं लगती, उससे भी डर लगता है, तो उस फोबिया को ऑब्रोफोबिया कहते हैं। Let's do the vocabulary voyage. Vanity in blind, screen for a window with adjustable slats to control the amount of sunlight coming.
Forestall, prevent someone else from doing something by doing it first. Picture the player who throws the baseball. Composure, state of being calm and in control of one's feet. Acquaintance is someone you know who is not close friend. Jubilantly behaving joyfully because of success. Cook's tour here a guarded tour. Meticulous, showing great attention to detail. Affectation behavior. Gloomy, sad and without much hope. Frothy, foamy, roiled up, unsettled and exercise. Inconsistent, saying strongly that you must have or do something that somebody will. Fail to express worries in a loud, high voice. Resignation, accepting that something can't be changed. Interminably, endlessly. Piped up, spoke suddenly, ominously, threateningly. Celestial, heavenly. Despairingly, desperate and hopeless. Shriveled, became wrinkled. Now let's engage and evaluate. Let us assess. Now let's do the true and false. Mrs. Sakaro is frequently seen sunbathing but never goes outside when it's cloudy. True. The Sakaro's home is described as being very clean and spotless, especially the kitchen. True. George feels comfortable and relaxed during the entire outing with the Sakaros with no subscription about them. False. Lillian dismisses George's concern about Sakaro's behavior as mere curiosity and that they are perfectly normal. True. Let's do fill in the blanks. George Wright was initially more interested in watching match in TV than in learning about the neighbors. Mr. Sakaro carries a radio during the outing to keep track of the weather forecast. At the amusement park, the Sakaros buy large quantities of cotton candy but refuse other food and drinks. The story ends with Lillian realizing that Sakaros melted because they were made of sugar and couldn't withstand the rain. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, complete exercises. Bye. Take care.